Good afternoon, everyone. Good afternoon. An initiative by Student Coordination Committee jointly with Task Force for Empowering Young CMAs and Task Force for Member in Industry of Western India Regional Council of the Institute of Council of India is organizing the session for evening talk How to Crack the Examination with Flying Color. I welcome you all for today's session. I welcome our guest CMA Mir Vassar, Chairman of Western India Regional Council of the Institute of Council of India. Welcome you, sir. Today's our moderator, RCMA Akshay Shah sir, RCMA Suraj Lahoti sir. I also welcome our panelists, recently qualified CMA. So today's our guest is CMA Mihir Vyas sir, Chairman of the Western India Regional Council of the Institute of Council of India. He has served as a Vice Chairman of ICMAI-WRC for the year 24-25 and Secretary of the year 23-24. Also, he served as the Chairman Student Coordination Committee of WRC, Editorial Board of WRC, Chairman Task Force Empowering CMA of WRC for the year 23-24 and 24-25, Chairman of ICMAI Baroda Chapter year 22-23, Practicing Cost Accountant, and also partner and Divanji and Company. He is MCOM, FCMA, DISA, DFA ID, and having practical exposure of around 13 years in the field of cost management accountancy and wide exposure in the area of statutory cost accounting prevailing in India in pharmaceutical and engineer sector. He started working with CMU Series Divanji during his studies, and since then he has been actively involved in the various assignments pertaining to management information system, cost audit, cost compliance, etc. He is closely involved in the cost audit assignment of PSU, Fortune 500 companies, and few MNCs. I welcome you, sir. I request to kindly address the students, sir. Meet, sir. Over to you, sir. Thank you, Tanmay sir, for my introduction and welcoming speech. Hello everyone, and good afternoon, good evening. This is CM Mihir Vyas, Chairman of ICMAI-WRC. It has been such an honor to be a part of this wonderful webinar on behalf of WRC and Student Coordination Committee. Also, Task Force for Empowering Young CMN members in industry. I would like to extend a really heartily welcome to our today's moderator, CMA Suraj Lahoti sir and CMA Akshay Shah sir, for accepting our invitation on webinar on how to crack examination with flying colors. Also, I would like to welcome our panelists CMA Hans Jain, CMA Chirag Kasar, CMA Sarthi Chawla, CMA Divya Rao, CMA Harshit Bagaria, and CMA Rensi Sahu. All are the All India ranks. And thank you so much for being here. This will definitely help the CMA experience. Your knowledge and experience will definitely help the our CMA experience. Also, I would appreciate the effort of CMA Nanti Paisa and CMA Arindam Goswami along with CMA Chaitanya Mohire for this wonderful arrangement and arrangement of seminar. And finally, also I would like to welcome all the present students. And over to you, my moderator CMA Akshay Paisa and CMA Suraj Lahoti sir. Before this, I request Tanmay sir, can you share the RCC 1 minute video? I welcome everyone to please do join us in the regional cost conference. Now this name will be changed. This is RCMAC Regional Cost and Management Accountant Conference, and this will be held on 13 and 14 February at Baroda. So I, on behalf of WRC, I welcome everyone. Do participate and do join. It's a 2-day event. We would like to invite distinguished like Anil Singhvi sir, Nilesh Shah sir, Kotak Managing Director Rivaba Jadeja, or other panelists also. Reliance Industries CFO, GAIL India CFO, all will be joining. So I request everyone do join as a student, as a CMA, as a member. You can join these events. So Tanmay sir, can you please set this 1 minute video? Thank you so much, Tanmay sir. Now over to you, CMA Suraj sir, CMA Akshay Vaisa sir. Thank you so much. Thank you, Mihir bhai.
you. Suroj bhai, can I start? Yes, start. Sir, just a second, sir, just a second. Today's our moderator is CMA Akshay Shah, sir. Brief about, sir, is an associate member of the CMA Institute and Entrepreneurship. He has completed BCom, MCom, Financial Management Diploma from Wellinger Institute, CMA from USA, MBA from Spain. He is having an own business into real estate development and government supply. Sir, as an associate with the institute as a student representative in 2008, all India topper in subject business valuation management, full-time faculty 2011, guest faculty since 2013, member of various task force committee of the institute in the last 10 years, mentor over 1,000 students on various front, advisor to startup, and conducted many seminars on communication skill. I welcome you, sir. Second moderator, Suraj Lahoti, sir. Suraj Lahoti is a distinguished cost and management consultant with over a decade of experience in strategic cost management, financial planning, foreign trade policy, regulatory compliance, and business process optimization. As the proprietor of Suraj Lahoti and Associate and the principal consultant at Liberal Consultment Private Limited, he has played an important role in transforming business through expert cost strategy, financial excellence. Sir is the ex-chairman at the Institute of Cost of India, Nashik chapter, recipient of the Cost Excellence Award at national level for outstanding contribution to cost management and financial strategy for a client, recognized speaker at ICMAI Nashik chapter and reputed management institution, panelist for student cost convention at ICMAI-WIRC, task force member of empowering and CMA at ICMAI-WIRC. I welcome you, sir. Thank you. So I request sir to kindly start the session, sir. Yes, Akshay. And Good afternoon, and good express evening, your views, sir. everyone. Yes, Tanmay sir, please make sure this video will be uploaded in YouTube also. Yes, sir. So, on behalf of the institute and myself, I welcome everyone for this session. First of all, many thank you to our chairman Mihir Bhai. I know Mihir Bhai since last many years, and now that he's chairman, our institute has been doing many innovative sessions under his vision and his chairmanship. So, Mihir Bhai, thank you very much for keeping the institute in the right direction. And we hope that there are many more such innovative sessions and programs and other initiatives coming soon. My I pleasure. also My pleasure. I also welcome my co-moderator, Mr. CMA Lahoti, sir. It's always nice to be conducting a session with him. And now let's get started with this particular session. Dear friends, now that exams are coming closer, you all must be quite worried or tensed or must be having a lot of emotions that how to prepare for the exam or how to crack the exam. या वो टेंशन में आते हैं तो क्या करना है, लास्ट स्टडीज कैसे करनी है. So all these things will be answered and addressed today by our panelists. I'm very happy to see all these faces, most of whom we recently happened to have an interaction during the pre-campus placement session. So I welcome all the panelists and I request each of the panelists to give their brief introduction in terms of where they are working right now, what is their designation, and their brief academic background. So I request we can start from CMA Hans Jain. Can we have a short introduction? CMA Hans. Thank you, sir. First of all, good evening to everyone. My name is CMA Hansen and I'm a qualified cost accountant. I secured All India Rank 1 in June 2025 term, and I'm also an All India Rank 3 in June 2023 term. I also secured in intermediate examination, and I also secured fourth rank in foundation level. Currently, I'm working in a central PSU, which is Mecon Limited, as a management trainee in corporate services. And yeah, that's all about me. अक्षय सर, आप सभी मॉडरेटर को बोलो एक बार उनका वीडियो ओपन करके रखें. Yes, please. All moderators, please keep your cameras on so that everyone can see you. Inspiration can come from many ways. Maybe seeing you can inspire someone. Yes. Hans, a question for you from the students. We can start with your question.
how do you manage your time during preparation for exams? If I talk about so As exam all are India ranker first, your volume is bit low. Can you check your mic? Audible, sir. Hello. Now I'm audible. Yeah, fine. इफ आई टॉक अबाउट मतलब अभी तो एग्जाम पास में आ चुकी है तो पहले क्या प्रिपेयर किया तो उससे तो कोई लेना देना नहीं है। अब जो Right. जिसने जैसा प्रिपेयर किया वो कर चुका है। मेनली अब जो 8 डेज अब आने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस यही एक डिफरेंस है जो अपने कोर्स को थोड़ा अलग बनाता है और एकदम टफ क्रिएट कर देता है। वो 8 डेज 8 डेज में Right. आपको कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे फाइनल हो मैंने दोनों लेवल पे बहुत कम स्लीप आवर लेके अपना सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश की थी। समथिंग अराउंड 2 to 3 आवर्स में रोज सोता था और कोशिश करता था कि मैक्सिमम मैंने अपना कंटेंट रिवाइज किया हो। बट या ये चीजें ना स्ट्रैटेजिकली पहले से प्लान्ड हो तो ही हो सकती है। इफ आई टॉक अबाउट एन एवरेज स्टूडेंट जिसको सिर्फ क्लियर करना है अभी तो मेरे हिसाब से उसके पहले से ही अगर उसने अच्छे से तैयारी की है तो उसने पहले से ये चीजें मार्क कर ली होगी कि उसे क्या पढ़ना है। तो वो इतनी कोशिश करे कि अपनी 4 to 5 आवर्स की एक अच्छी स्लीप ले और मैक्सिमम टाइम वो जो उनके ABC कैटेगरी जो भी डिवाइड किया हुआ हो उसमें अच्छे से रिवाइज करे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्योंकि सारी चीजें एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के नहीं जा सकते। तो Right. दैट इज वेरी क्रूशियल। और इफ समवन इज प्लानिंग फॉर अ रैंक तो मैं उसे ये बोलूंगा कि भैया आपके दिन आ चुके कि आपको अब कम सोना है और 2-3 घंटे ही सो के अपना वो 8 दिन निकालने। वो 8 दिन के बाद में जो नींद आनी है वो वैसी नींद कभी नहीं आई होगी आपको। Yes. तो नींद पूरी छोड़ देने की अभी 8 दिन के लिए. Right. Our next panelist is Chirag Kasat. He is All India Ranker 2, currently working at Ernest and Young as the associate. Welcome, Chirag. Please introduce yourself in short. Yeah, Are hello you there? everybody. Yes, hi sir. Yes. Yeah, am I audible? Yes. Yeah, so first of all, I would like to thank you all to, invite me here for this great session. And I would like to thank the WRC Council for holding such a great session. So, I am CMA Chirag Kasat. I recently qualified in the June attempt within an All India Rank 2. In coming to my academic qualification, in addition to being a CMA, I'm also a CA and CS. Right now, I'm working at EY Ernst & Young in their financial due diligence practice as an associate. I joined in May this year. So yeah, that's a brief about me. So the question for you is, what was your strategy for revision before exam? So coming to my strategy before revision was, I think now since we are coming in the last last week of for the exams, so I think what Hans said, I would concur with that you know what you're good at, what आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है. You know that part of yours. So focus on those things. Ki what do you want to focus more time on? Ki if you know that this part in this subject I need to invest more time. Like for me, I always knew that for me practical subject was a much more stronger component than theoretical. So I used to invest more time in theoretical subjects like audit and law and everything. So focus on that part because at the end of the day आपको ये realize करना है कि आपको एक साथ 8 papers clear करना है. It cannot be कि आप एक ही paper clear कर रहे हो and आगे. So you need to balance your time accordingly. You cannot just focus on one subject. Means the way I've talked to some of the people, sometimes I see that people are like कि हम लोग का ये subject अच्छा है, so most of the time they are just focusing on that one subject. Don't just focus on one particular subject. You have to spread your time across all the subjects. Know what are your strengths in the paper that you're doing. You need to capitalize on those strengths कि जो questions आपके strength के chapters से है तो आप उस पे best अपना marks score करो. वहां पे you need to score the highest. जो आपका weak आप paper से पहले ही उतना realize करो कि अच्छा ये chapter weak है तो I have to leave that one question because in the paper you can leave one optional question. So you have to identify that question and start that. And since you're in the last 8 days, I think more than revision because
studies to sabne, I think everyone has been doing in their own, and now you're coming the last time. I'll say the best thing for me in the last 8 days across any exams that I've given is mock exams. There's something that I'll be, I think, asking all of you is that if you have not given at least one, please give one mock exam, one whole structure, so that you have an idea ki how the paper would be, how would I be giving it. So you know how the experience would be, and it won't be something new. So Right. that is all from my side. So those are very good inputs by Akshay sir, your voice is not coming. Chawla, final AI, sorry. Not able to hear you, Akshay sir. Am I audible? Hello? Yes, yes, yes. No. Yes, sir. Okay, these were good inputs by CMA Chirag. Now we move on to our next panelist, CMA Sarthi Chawla, final All India rank 14. Currently working with the Axis Bank as a manager, WBO, Trade and Forex Operation. So could you please give your brief introduction? So, hello everyone. I am Sarthi Chawla, recently qualified cost management accountant. I have secured All India rank 14 in CMA final examinations and All India rank 19 in CMA intermediate examinations. And I recently also cleared my CA examinations, and now I am working in Axis Bank as a manager in trade and forex operations. Great. So good to have you, CMA Sarthi. The question that we have is now, let's say the previous panelists explained about how to prepare for the exam or how to study basically. Now that you appear for the exam, you're in the exam hall, you're going through the question paper, you're preparing for your answers. So sometimes it happens that we don't know the answers of certain questions, or some questions we find very tricky. So in such scenarios, what do we do? Like, what do you do if you don't know the answer to a particular question in the exam? Like talking about my examination tips, like what I used to do is मैं पहले 15 minutes में ये देखता था कि मेरे को कौन से क्वेश्चन सबसे अच्छे से आते हैं. जो आपको सबसे अच्छे से आता है आप उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो. आपका एक स्टार्ट अच्छा हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाएगा कि भाई मेरे को पेपर आ रहा है. जो नहीं आता उसको लास्ट मिनट्स के लिए रख दो कि बाय चांस आपका पेपर लेंदी है और पेपर छूट भी रहा है तो वो क्वेश्चंस आपके छूटेंगे तो आपको इतना रिग्रेट नहीं होगा. और यही जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते होंगे वो छूट जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा. यस. तो जो क्वेश्चन आप पहले सिलेक्ट कर लो अपना ऑर्डर कि मेरे को ये ऑर्डर में अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. जो आपको सबसे अच्छे से आता है उसका पहले अटेम्प्ट करिए, जो नहीं आता उनको लास्ट के लिए छोड़िए. लाइक दिस आई यूज्ड टू फॉलो इन माय एग्जामिनेशंस. Just to follow up with the question, the same question. Yes. जो answers पहले आ रहे, if we write them, and you have a lot of time to let's say at the end of the paper, let's say you have half an hour to go, and now you are at the questions that you don't really know, or you don't know how much the answer that you can write. So वो tricky situation में what did you do? Did you come across such situation, or you just simply Yes, it happens with everyone. Like the paper and all the questions, but yeah. Yes, it used to happen with me also. But what I used to do is कि अगर मेरे को क्वेश्चन का आंसर पूरा सही से नहीं आता है तो उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक के बारे में मेरे को जितना भी कंटेंट पता है मैं ट्राई करता था कि मैं सब पेपर में डाल दूं अपने, कि अगर चेकर जो है वो चेक करेगा तो उसको पता चले कि मेरे को ये टॉपिक के ऊपर नॉलेज है. अगर मेरे को पूरा आंसर नहीं भी आता है तो मैं वो सब पेपर में लिख दूं, कि अपना पूरा ट्राई करूं कि उसमें एटलीस्ट मेरे को 1-2 मार्क्स भी मिले तो उससे मेरा रैंक ऊपर नीचे हो सकता है. तो कभी भी क्वेश्चन को पूरा छोड़ने से अच्छा आपको उसके बारे में जो भी नॉलेज है वो उस पेपर में डाल दो. राइट. मतलब एक एजुकेटेड या लॉजिकल गेस बोल सकते हैं या नॉलेज शेयरिंग बोल सकते हैं वहां पे, जो अपने को मालूम है अपने का. हाँ, लाइक अपने को पता है कि अपने को आंसर नहीं आता है तो कुछ मतलब 0 से अच्छा है कि अपने वो लिखे और 1-2 मार्क्स भी आ जाए तो उससे अपना रैंक ऊपर नीचे हो सकता है. राइट, राइट, राइट. Yes, good answer by Sarthi. Our next panelist, Divya. Sir, sorry for disturbing in between.
Yes. Our student coordination committee chairman or vice chairman of the institute, CM Nanti Shah sir, joined the session. I welcome you, sir. So, Nanti Shah sir, can you hear me, sir? Yeah, am I audible? Yes, sir. Sir, address the students, sir, please. So first of all, let me thank Suraj sir for continuing to host this session. This time we also have Akshay Bhai to accompany him. And all the successful students, I understand the campus has been over. You all might have been joining your organizations and you have taken your time. And all the audience, I would really cherish the efforts of the previous student committee chairman Mir Bhai, who has drafted this kind of session, and I have privilege of continuing the same. And I'm sure that all the tips and tricks and the ways the all India rankers and all the merited students have used to achieve this success, you all will be evolve into success. Sorry, I am late. I was stuck at some personal thing. So once again, sorry for the interruption. I'll keep this short here, and please continue the conversation. I'll try and get back at the vote of thanks. But if not, once again, take most of the same. Most benefit of this session, and once again thank you Suraj bhai, Akshay bhai, and Tanmay bhai also for organizing this. Thank you. Thank you, Thank you so Nanki much, sir. Bhai, I, for I would joining. just I'd like to add one thing with 90 Bhai. I have seen him working very hard for the institute at least since last 15 years. So I can really vouch for his commitment and his dedication towards the institute. So thank you 90 Bhai for your guidance, and we welcome you again for this session. Thanks, Yes, sir. Thanks for your kind words, sir. yes. Thank you, Nanki Bhai. Our next panelist, Divya Rao. She is All India ranker 15th and now working at Marico Limited as a financial trainee. Divya, just introduce yourself in short. Hi, I'm Divya Rao. I secured All India Rank 15 at the CMA final examination and All India Rank 1 at the CMA inter examination. I'm currently working as a finance trainee with the business finance team in Marico. Yeah. Yeah, the question for you, Divya. What you would advise who is struggling with the preparations? I'm sorry. What you will advise the students this last moment when they are struggling with some subject, some specific subject? So I think like the mental state of mind that you are in during the final stages of examination is what decides everything that you go through during the examination when you're in the hall. So there are definitely subjects that's happened with me too, where I've found it difficult to cope with certain subjects, where I've not been so sure about certain subjects. So what has helped me during those times is just making like key notes on the areas that I was not so sure of and not dedicating too much time on that particular subject, because that won't help you now that you're in the final stages. So rather focus on what you're strong at, and वो ठीक से कर लोगे तो इसमें जरा confidence तो भी मतलब it's manageable. It's honestly not that difficult. You can crack it, but yeah, it's very essential to focus on what you're good at, and this is not the time to focus on something that you are not very strong at. You can just go through it once. Yeah, that's what I would suggest. Right. So focus on what you are strong at. Students, you can also raise your hands and you can also ask questions to the panelist anytime you want. Just raise the hand. We will let you speak. The Now, next, moving yes, forward, our next panelist is CMA Harshit Bagheria. Is All India rank 22 and currently working with the Axis Bank as a manager. So, CMA Harshit, could you please give your brief introduction? Yeah, sure. First of all, I want to thanks the CMA chapter for organizing the event just before the exam for motivating the students. So yeah, a big thanks to them. And secondly, I am Harshit Bagheria. I have secured an All India rank 22nd in my CMA final examination and also All India rank 6th in my CMA intermediate examination. Besides that, I also hold a
a degree in CA. Yeah. And currently I have been working with one of the leading bank, Axis Bank, as a management trainee in the finance and account department. Okay, so CMA Harshit, I have a very practical question for you because let's say आज के तारीख में we all live in the world of social media and a lot of distraction from a device called our mobile phone. So during the exam period or as the exams come closer, how do you manage the let's say that balance between studying very hard and also trying to take a break or go through some social media or reels or Instagram or whatever, because a lot of times those things consume our time a lot, and be it chatting on WhatsApp, talking to friends, or basically anything and everything that is not related to studies is something that we are otherwise doing. And now अभी एग्जाम क्लोज आ गया तो सडनली वो सब छोड़ के पढ़ाई करना रहता है, सो इनिशियल डेज में इट कुड गेट डिफिकल्ट. So how did you balance it out? Is there any formula that you worked out, or is there any specific discipline that you followed? How did you manage that? Yeah, first, thanks for asking the question. Actually, I being a myself student face the same problem, you can say, during my preparation. Like I used to see every second my phone whether there any new message has come or like this. So for that I use a simple strategy कि बॉस अगर मैं रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी पे काम करता है, अगर मैं 1 घंटे की पढ़ाई करूँ उसके बाद ही आई यूज टू सेट अलार्म कि चलो 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज कॉल या जो भी मेरे को कुछ सर्च करना है पढ़ाई रिलेटेड, आई यूज टू डू इन दैट 5 मिनट्स. सो उससे क्या होता था, एटलीस्ट यू गेट टू हैव 1 hour ऑफ फोकस स्टडीज. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड नो डिस्ट्रैक्शन विल हैपन. सो आप ऐसा एक स्लॉट सेट कर सकते हो. Okay, but let's say for you must be also talking to your friends or discussing with your friends regarding similar issues. Or is there anything different that they did or they followed, or something like a general formula that you can give or share with our prospective students regarding the same, about the balance, work-life balance, so to say? Yeah, you first of all, you been in that current era, you cannot totally eliminate the distraction. You have to reduce it by step. Like आज सेकंड मैं अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर करता था. लाइक अगर आज मेरा 8 घंटे का स्क्रीन टाइम हो रहा था, तो कैसे मैं उसको कल 6 घंटे का स्क्रीन टाइम कर सकता था. तो इट हैज टू बी स्टेप बाय स्टेप, आपको रिड्यूस करते रहना पड़ेगा. Right. Thank you, Arshit. The next panelist with Thank us is Rensi Shahu, All India ranker 38th, now at Ernest and Young as a technology consultant. Hello, Rensi. Just Yes, sir. introduce I'm yourself here. in short. Okay. Hello, everyone. I'm Rincy. I'm All India Rank 30, currently working at Ernst and Young as a technology consultant. You all have heard that all the members who are ranker in final are ranker in inter as well. But that is not in my case, because in inter I have appeared for single group, because I used to think that by achieving both groups I won't be even able to clear the exams. But when I tried, that was not the case, and I landed to rank. That's all. So there is a question from Pooja in chat box. As a rank holder, how did you manage those 8 days of exams, especially on days when an exam didn't go as well as expected? I am curious about how do you handle the mental pressure and stayed focused throughout the entire period. Any insights or advice would be really helpful. Pooja, are you there? You want to add something in this? Pooja? Okay, let's start. ओके तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उन 8 डेज में प्रेशर और स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है. मेरे खुद के लिए ये बहुत नया था फाइनल में, क्योंकि इंटर में मैंने सिंगल ग्रुप दिया था, तो पढ़ने के लिए 1.5 दिन होते थे. पर फाइनल में लाइक लॉ के एग्जाम के लिए हमारे पास 4 दिन होते हैं पढ़ने के लिए, तो वो इजीली चला जाता है. लॉ का पेपर अगर अच्छा गया तो बाकी पेपर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, पर अगर लॉ का पेपर ही खराब गया तो घर आके लाइक मेरे साथ क्या होता है, लॉ का पेपर सही गया था, ऑडिट भी बहुत सही गया था, थर्ड पेपर होता है SFM, वो मेरा बहुत गंदा गया था. 15 मार्क्स का क्वेश्चन मैं छोड़ के आई थी. घर आके
मैं पढ़ नहीं रही हूँ CFR के लिए, मैं बस बुक कॉपी खोल के बैठी हूँ SFM के पेपर के टाइम कि मेरा पेपर इतना गंदा गया, मैं तो फेल हूँ। मन भी करेगा कि पेपर ही ना दो नेक्स्ट, ऐसा लगेगा कि हो गया, मैं तो पक्का फेल हूँ, जाने देते हैं। बट नहीं, ये नहीं करना है। यू हैव टू फोकस ऑन नेक्स्ट पेपर, क्योंकि जो जा चुका है वो अब वापस नहीं आएगा। तो इंस्टेड ऑफ पुराने पेपर का सोचने का, नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचो। जो चीजें छूट गई वो रहने दो और स्ट्रेटेजिकली पढ़ो। और सोने का तो बिल्कुल मत सोचना। सब बोलेंगे कि चिल करो, जो साल भर पढ़ा है वो याद आएगा पेपर में बैठ के, पर नहीं याद आएगा, कुछ नहीं याद आएगा। मुझे कुछ नहीं याद आता था। एक दिन पहले जब मैंने जितना रिवाइज किया सिर्फ उतना याद आता था। और मैं ये बोलूंगी कि थ्योरी पे बहुत फोकस करना, क्योंकि थ्योरी 20 मार्क्स की आएगी। और जब कभी कभी ऐसा होगा कि प्रैक्टिकल के क्वेश्चन तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहे होंगे, पर थ्योरी कहीं ना कहीं तुम कुछ तो लिख लोगे। और ट्रस्ट में कि थ्योरी में टीचर्स जितने भी खड़ूस हो वो मार्क्स देते हैं, 3 से 4 नंबर तो देंगे इजीली। और प्रैक्टिकल में अगर शुरुआत से ही गलत बनाओगे तो पूरा मार्क्स क्रॉस हो जाएगा। तो ये करना, और पेपर जरूर अटेम्प्ट करना। भले ही पेपर तुम्हारा बिगड़ चुका हो, गंदा हो चुका हो, पर नेक्स्ट डे पेपर जरूर देने जाना। और वो 3 घंटे एग्जाम में बैठे रहना। कुछ लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, पेपर में ड्राइंग करते रहना, पर बैठे रहना 3 घंटे। That's it. राइट, वेरी वेल सेड। पूजा, और आपको कुछ डाउट है? पूजा, यू कैन स्पीक अप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Suraj bhai, one more thing that I would just like to add Yes, along sir. with Tanmay sir. We are having more than 125 attendees for this particular session, which is Yes, commendable, yes. and it talks about the Questions are success of coming. this session. A lot of questions are coming. So a common question, if I just am to, let's say, if I am to see it from a bird eye point of view, some students are struggling with some particular subjects and they want to understand how to particularly prepare for those subjects. So any of our panelists, maybe Hans, if you could tell us subject by subject by subject, or any particular subject that you actually struggled with to prepare for, कि आप उसको कैसे प्रिपेयर करते थे, उसमें से जो चैलेंजेस थे उसको आप कैसे डील करते थे, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दोस चैलेंजेस, बिकॉज यू हैव गॉट रैंक, यू हैव डन वेल डीलिंग विद दोस चैलेंजेस। तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहता था टू डील विथ योर वीक सब्जेक्ट? Anybody of you can comment on this? Yes, Hans. Hans, you are mute. If I talk about each and every subject, तो मेरे को सबसे खराब लगते थे थियरी सब्जेक्ट। आई जस्ट हेट थियरी। तो मेरा तो सिंपल शॉर्ट तरीका था कि मैं प्रैक्टिकल पेपर में थियरी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कि प्रैक्टिकल पेपर सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए बने, वो थियरी के लिए बने ही नहीं है, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑडिट। उसके अलावा तो सब में मैं प्रैक्टिकली करने वाला हूँ। अगर मैं लॉ की बात करूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मेरे हैंड रिटन नोट्स तैयार थे, और मेरे को लॉ थोड़ा सा ऐसा लगता भी था, कहीं कहीं जो कंपनी लॉ होता है वो तो सबको लॉजिकल लगता है, बाकी सारे लॉज में सबको ऐसा लगता है कि रट्टा मार रहे हैं। तो मेक योर माइंड कि आपको एट द एंड ऑफ द डे आप सारे नहीं कर सकते, सारे चैप्टर्स पढ़ के नहीं जा सकते लॉ में। तो आपको ये करना चाहिए कि जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, एक ट्रेंड आपका तैयार होना चाहिए, तो वो पहले कर लो। अगर वो कर लोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, लॉ में एक मोटा मोटी पोर्शन तो हो गया है। एंड थियरी फर्स्ट लॉ के पेपर के लिए आपको सबसे ज्यादा दिन मिलते हैं, मीन्स अनलिमिटेड डेज। जब तक आप तैयारी कर रहे हो वहां तक के दिन है आपके पास उससे पहले। तो लॉ की तैयारी अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो दैट विल हेल्प यू मोर। और स्पेशली अगर मैं मेरा बोलूँ, लॉ में तो मेरे को फैमा सबसे ज्यादा डेंजरस लगता था। तो आई यूज्ड टू स्किप फैमा ईच एंड एवरी टाइम, कि फैमा मैं तो नहीं करूंगा, रिवाइज भी नहीं करूंगा मैं तो, बस लास्ट दिन पहले एक बार देख के गया था। एंड इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, मैं सबको ये एडवाइस देना चाहूंगा अभी, पिछली बार इंश्योरेंस एंड बैंकिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 क्वेश्चन आए थे इन पेपर। तो डोंट स्किप इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। इंश्योरेंस बैंकिंग में बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड इफ एनीवन वांट कि मैंने कैसा मेरा पेपर लिखा था, तो आई हैव ऑल द सजेस्टेड आंसर ऑफ माय आंसर शीट्स, तो मैं वो आपको दे दूंगा। एनीवन कैन कांटेक्ट मी। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एसएफएम में सबको सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोग फेल होते हैं। तो एसएफएम का ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि अब तो तैयारी का समय खत्म हो चुका है, तो मैं तैयारी कैसे करी होगी उस पर तो कमेंट ही नहीं करता। एसएफएम में आपको ये सब्जेक्ट होना चाहिए कि आप
2-3 चैप्टर्स जो है उनको बाय हार्ट आपको क्वेश्चन करनी है. दैट इज बिफोर योर वन डे. दैट इज म्यूचुअल फंड, that is your portfolio management, and that is one is your bond and equity valuation. अगर आप ये 3 चैप्टर करते हो और साथ में अगर आपने एमसीक्यूज की तैयारी की है, मैं बता दूं एमसीक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं. बहुत ज्यादा अगर आपने पास्ट ईयर पेपर्स देखे हुए हो तो आप एमसीक्यूज अच्छे से क्रैक कर पाओगे. मींस आउट ऑफ 30 यू कैन एटलीस्ट स्कोर 20 आउट ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स. दैट इज फॉर श्योर. तो ये मेरी एनालिसिस है. मैंने लास्ट के 2012 तक के पेपर में देख के गया हूँ, एंड इंक्लूडिंग सीए पेपर आल्सो, जो सीए का एएफएम होता है. तो मैं उतने बेट श्योर के साथ बोल सकता हूँ कि एसएफएम में अगर आप ये 3 चैप्टर करते हो और अपने एमसीक्यूज को अच्छे से क्राफ्ट करके आते हो, अच्छे से टिक करके आते हो, तो यू कैन क्लियर योर एसएफएम पेपर. एंड थर्ड पेपर जिसमें सबसे ज्यादा एक और दिक्कत होती है वो होती है सीएफआर. सबको कंसोलिडेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे बहुत ज्यादा डर लगता है. तो मैं ये बोलूंगा अगर आपको कॉम्बिनेशन स्ट्रांग नहीं है तो उसमें एक चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिससे 7 मार्क का एक क्वेश्चन फिक्स आना है. तो 7 मार्क का एक फिक्स क्वेश्चन आपको हमेशा करके जाना है. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में 10 से 20-25 एडजस्टमेंट होती है. वो 20-25 एडजस्टमेंट अगर आपने देख ली, बेसिकली इट ऑल्स अबाउट जनरल एंट्रीज, अगर वो देख ली तो आपके 7 मार्क्स उधर पक्के हो जाते हैं. दूसरा, अगर आपको कंसोलिडेशन नहीं आता, अगर आपको मोटा मोटी थोड़े बहुत स्टेप्स भी आते हैं तो डू इट. मेरा भी कंसोलिडेशन टैली नहीं हुआ था, मेरा कॉम्बिनेशन टैली हुआ था, बट मैंने चेक किया कि मेरा उसका आंसर टैली रॉन्ग था. बट ऑल माय स्टेप्स आर करेक्ट. एक आधी जगह पे इन कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन एक आधी जगह पे थोड़ा एरर हो गया था, उस वजह से अमाउंट्स रॉन्ग थी. बट मुझे दोनों में ही बहुत अच्छे मार्क्स मिले. आउट ऑफ 14 आई गेट मोर देन 10 इन बोथ द क्वेश्चंस. तो ये चीज बहुत जरूरी है. भले आपको पूरा नहीं आ रहा, एटलीस्ट ट्राई इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन. स्टेप्स के मार्क्स बहुत अच्छे से मिलते हैं, और कैसे मार्क्स मिलते हैं वो भी अगर आपको जानना हो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एंड यू कैन रेफर इट. और अगर आपका सीएफआर में प्रैक्टिकल उतना स्ट्रांग नहीं है तो देन प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स. आप कोई भी छोटा सा वीडियो देख के, रिविजन वीडियोस देख के उसको रिवाइज कीजिए, छोटे से नोट्स बनाइए. और जैसा रेंसी ने बोला था, थियरी में कितना ही गंदा टीचर हो, मार्क्स दे ही देता है थोड़ा बहुत तो वो मिल ही जाते हैं. तो एटलीस्ट ट्राई दैट अगर आप कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन नहीं कर पाते तो. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ये 3 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को इसलिए. Right. Chirag, can you tell what are the most common mistakes students make during exams? इसके ऊपर कुछ बात कर पाओगे और इसको कैसे रिजॉल्व करना? चिराग और एनसी? Yes, Chirag, please. So I think if coming to the most common mistakes is, first of all, I think is time management. I think talking about the paper as a whole, time management, because at the end you have to realize कि I think this point has been covered by all कि always try to attempt 100 of the 100 marks. अगर आपको नहीं, पहले आप अपना try करो कि जो आपको एकदम clear है, you go for that, you attempt those questions, and when you have time left, always plan कि अच्छा, if this is like I'll tell you, this is a simple math that I used. It's a 3-hour paper, 180 minutes. तो आई यूज टू कीप इन माइंड अ स्टैंडर्ड कि मेरे को 150 में खत्म करना है, एटलीस्ट 30 मिनट्स मेरे को बफर में रखना है. तो आई यूज टू हैव एन एवरेज कि 100 मार्क पेपर है, 150 मिनट्स, तो बेसिकली पर मार्क 1.5 मिनट. नाउ दिस अ वेरी एलिमेंट्री थिंग. इट इज नॉट कि आपको यही फॉलो करना है, बट एक यू हैड एन एवरेज टाइम कि इफ लाइक इट्स अ 7 मार्क का क्वेश्चन, देन अराउंड 10 मिनट्स में ही रैप अप होना है. So always have a thing कि you have to finish the paper very in a time management manner. It should not be that at the end of the day you are like I knew the answer but I couldn't because of time issues. So one of the major things I'll say is time management. Second thing is कि I'll ask everyone कि use those 15 minutes of reading time very smartly. Since you have one optional question, always in those 15 minutes, like for me, I had कि out of all the 8, I think in 6 papers, I was very sure in the reading time itself कि I'll be leaving this question as the optional question. What many times happen is like you are doing just 1, 2, 3, 4, 5, 6 question, and the end you realize कि यार मेरा third question मैंने थोड़ा attempt कर लिया है, but मैं इसको छोड़ के बाद जो last वाला question था, that was much I knew that question very well. Right. Because you didn't even go through that question. So in that 15 minutes of reading time, have that surety कि I'll be leaving this question. मेरे को यही 5 question करने हैं, तो I'll focus on these 5 questions only. It should not be कि अब मैं ये करूँ कि पेपर में उतना फिर टाइम नहीं बचता because you get hustled.
And lastly, I would say is ki stay confident. See, even as a ranker, matlab, across both inter and final, and I think everyone who is among the panelists will agree that it was not for us also that ki we knew 100 marks of the paper when we were sitting on the paper. There were many questions that we were like ki ye shayad maybe nahi hai, maybe this we don't know that well, iska answer theek hai pata hai. There were some questions we know ki हाँ इसका पता है. So it should not be कि आपको अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहा, you get एकदम हसल कि I don't know the paper. जितना you know, first focus on that. Try scoring that. See, at the end of the day, for anything you are preparing to take just a pass or rank, that is your preparation, you decide. But you need to get 40 and 50 only. Even if I'll take a normal math as like in MCQ you're able to get 20 marks. At the end, out of the next 70 marks, you just need a 20 marks to clear the paper. अगर आपका वो पेपर स्ट्रॉन्ग नहीं है, if you say law paper, people are not that confident about theory. आपका MCQ बहुत अच्छा गया, you are sure कि 15 में से I'll be getting 7 right, you are getting 14 marks. तो next 70 marks में से आपको सिर्फ 26 marks लेके आना है उधर. So that is very easy for you. So don't get startled कि maybe I don't know one question. You may not know 1 or 2 questions, but there are 5 other questions for you to attempt. Right. That, and last of all, always keep some buffer in whenever you're writing answers. Now, once your answer is over, give some space. If the page is blank, just leave that space blank and start your question from the next page, next question. Because it may happen that you suddenly after some time you realize I can add this part also here. So leave that space that you can just add that part. Suppose you're doing a theory question and you suddenly remembered that this point would also look good in my answer. So just add that. So these are just my points. Akhir, end of the day, every subject has, you focus on what you are good at, take your best. Jahan pe you have to take a 200 in aggregate or 400 in aggregate. So that aggregate can also be from 40 and 60 and 50 and 50. So it's for you to decide how you want to reach that aggregate. Right. It's a fair and long explanation and inputs by Chirag. I would like to ask Divya, going back from the examination day. I think Shah sir has gone. Join, sir. Yes. He's joining? Yes, sir. Yes. Okay. Someone just removed me from the session. I don't know who did that. Anyway, so yeah, the question to Divya, let's go a little back from the examination day to the preparation time. So let's say this is the December attempt. At what stage you actually thought of getting started with your studies seriously? And then when you knew that you're going to appear for you, as in not you individually, but somebody, maybe one group or two groups, both the groups, X number of subjects. So then how do you plan your next 2-3 months or 1 month or whatever? So two questions. One, since how long, like how much in advance you started studying? And number two, whenever you started studying, how did you plan your studies in terms of how much time to give to each subject? एक सब्जेक्ट आप एक हफ्ता करते थे या every day you would study 2-3 subjects, and what was your planning like? So I had one plan very straight, like right before appearing for my finals, was कि मेरे को दोनों attempts दोनों groups साथ में देना था. Like, so my goal was set right from the beginning, so I studied according to that and not as per मेरा जितना पढ़ाई हुआ है उसके according मैं दोनों group दूंगी. So how that helps is because it's psychology, because you have the target set, you will study according to that, because फिर you will be like कि मैंने ये target set किया तो मेरे को इस time पे ये सब खत्म करना है. Now how I went about that was so मैंने at least 3 to 4 months back, before appearing for exams, I started making my schedule. So I used to make weekly schedules because let's agree that it is very difficult to stick to long-term plans, and kabhi things don't work out as per what you have planned. So I used to make 1 week schedules. I started with group 3, and we know that tax and SFM can be time consuming, takes up quite some time.
So I started with tax and SFM, and मैंने उनको time dedicate किया था. फिर slowly I completed other 2 subjects, and then group 4 is not as time consuming as group 3 is. So accordingly मैंने उसके लिए भी time set किया था. Now once I'm done with all my studies, revision is very important. And depending on the quality of revision, you can be sure that exam कैसा जाएगा या नहीं. So like revision का time I used to set, and then accordingly एक week में मैं at least 2 subjects touch करती थी. So it is not possible to go through all 3 subjects or 4 subjects. So it also depends, like quality over quantity any day. So मैं at least like 1 week 2 subjects, the next week other 2 subjects. So theory is something that I was not very good at. So law जैसे कि, so I would combine law if that's a theory with some practical subjects so that you don't get bored studying. So morning for theory and evening for practicals वैसा करते करते you can have quite a productive day, because दोनों part of syllabus cover हो रहा है आपके. So yeah, so planning at least like you get very serious at least 2 months before your exam. And मेरा ये था कि 1 month before exam you need to like wrap up everything, because that month for me was for mock tests and whatever like बचा हुआ है ऊपर से which have not completed. So mock test at least एक देना is very important as for me. And one of the panelists also rightly mentioned that because it gives you confidence to appear for the exam, and it won't feel new when you appear for the exam. You'll be like, अरे ये मैंने घर पे भी किया है. So it's that familiarity that you have. Yeah, that's all I'd like to say. Yes. Okay. काफी अच्छे से दिव्या ने he has done a brief of what should be done before exam. Ransi, some foundation students are there with us. तो थोड़ा पीछे जाके can you guide the foundation students how to prepare for the exams? Score Yeah, the sure, best. definitely. Yes, Ransi. इंटर और फाइनल देने के बाद तो फाउंडेशन तो कुछ भी नहीं था. वेरी इजी. Right. इट वाज लाइक ऐसे हो जाएगा. तो ऑल दोस हु आर इन फाउंडेशन, 4 सब्जेक्ट्स है ना फाउंडेशन में भी, लॉ, मैथ्स, कॉस्ट एंड वन मोर Cost सब्जेक्ट and इज financial accounting, economics. ओके इकोनॉमिक्स. Economics. तो लाइक 11 12th का बेस अगर क्लियर है ना तो फाउंडेशन बहुत इजीली हो जाएगा. एक सब्जेक्ट है लॉ, उसमें मेहनत लगेगी. इनिशियली वो हार्ड लगेगा, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लोगे, मॉक टेस्ट दे दोगे, तो लॉ का पेपर भी बहुत इजीली हो जाएगा. और एक और है मैथ्स. जिसने 11 12th में मैथ्स नहीं लिया था, जैसे कि मैंने 11 12th में मैंने मैथ्स नहीं लिया था, तो फाउंडेशन का मैथ्स मुझे हार्ड लगता था, क्योंकि उसमें जो 11 12th में मैथ्स लिए थे वो लोग कहते थे बहुत ईजी है, पर मैं नॉन मैथ्स थी तो वो इनिशियली हार्ड लगेगा, बट प्रैक्टिस करना. और स्टडी मैथ तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, लॉ का मैथ्स का दोनों का, क्योंकि स्टडी मैथ से ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे. फिगर्स अलग होंगे पर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे. और कॉस्ट तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि इंटर और फाइनल में फाउंडेशन के कंसेप्ट्स बहुत काम आने वाले. Right. दैट्स ऑल. Right. ओके. सो अभी फाउंडेशन का जैसे आपने बताया, वैसे कैन हंस टेल अस अबाउट हाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर द इंटर एज वेल, बिकॉज अभी फाइनल का हो गया है, फाउंडेशन पे बात हो गया है. So the people who are attending, who are in the inter stage, can you guide them how you prepared for your inter exams? If I talk about intermediate, तो मैं बोलूँगा मेरा फाइनल और इंटरमीडिएट तो सेम ही निकला है. मतलब दोनों में इक्वल मेहनत लगी है. अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ ना, तो अगर कोई बोथ ग्रुप दे रहा है तो सेम लाइक फाइनल, जो फाइनल के लिए अभी जितने भी पैनलिस्ट ने बताया है, वो सेम गाइडेंस एज इट इज एप्लीकेबल होती है इन इंटरमीडिएट ऑल्सो. इंटरमीडिएट में भी लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा टफ लगता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा टफ लगता है. तो मैं अगर क्रक्स में बताऊं कि आपको इंटरमीडिएट में क्या करना चाहिए, तो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आपके पास एक दिन है हर एक एग्जाम के बीच में, तो यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन. अगर आपके नोट्स तैयार है तो बहुत बढ़िया है कि आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए. अगर आपके नोट्स तैयार नहीं है तो मैं इधर इंटर फाइनल फाउंडेशन कुछ भी हो, मैं एक तरीका बताना चाहता हूँ किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं अपनी चीजों को. अगर आपके पास अभी थोड़ा 4-5 दिन बचे हैं ना, राइट, तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, गो फॉर अ मैराथन, गो फॉर अ रिविजन वीडियो.
गो फॉर समथिंग लाइक कि अगर आपने किसी टीचर से पढ़ा है या आपने यूट्यूब से स्टडी की है, तो आपने कोई वीडियो फॉलो किया होगा, तो कोई भी वीडियो का रिविजन वीडियो उठाइए, 1.5x पे देखिए, उसको फटाफट रिकॉल कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, सबसे पहली चीज होती है रिकॉल कर पाना। अगर आप रिकॉल कर पा रहे तो आप सारे, चाहे कोई भी हो, इंटर फाइनल फाउंडेशन आप कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कंटेंट रिवाइज कर लेना चाहिए, जो सब्जेक्ट का अगर आपको टफ लग रहा है, तो आप अपने टफ सब्जेक्ट को इस तरीके से फटाफट एक आधे दिन अभी पहले फर्स्ट एग्जाम को ना देके, सपोज लॉ आपको इजी लगता है, तो देन डोंट गिव ईच एंड एवरी डे टू द लॉ, गिव 2 days टू द लॉ। एंड अगर आपके पास अभी 1-2 दिन और है, तो आप 1-2 दिन अभी अपने वो वीक सब्जेक्ट के जो भी रिवाइज करना बाकी रह गया है, या रिविजन नहीं हुआ है, या कोई कंसेप्ट याद नहीं आ रहा, या डर बहुत ज्यादा लग रहा है, तो एक रिविजन वीडियो देख लीजिए, आप अपने कंसेप्ट को रिकॉल कर लीजिए। दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज द टाइम कि आप एक अपने कंसेप्चुअल रिविजन करके साथ साथ में क्वेश्चंस को घुमा सकते हैं। मींस आपके बाजू में आपकी क्वेश्चंस की बुक घूम रही है, और साथ में आपका वो कंटेंट रिवाइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल डीटी प्रोविजंस रिवाइज हो रहे हैं, साथ में 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख रहे हो, एंड दैट्स ऑल। यू कैन डू this strategy for each and every subject in whichever subject you are feeling very low. Right. एक छोटा सा क्वेश्चन था हंस, व्हाट अबाउट द सेक्शंस, मतलब शुड वी राइट सेक्शन इन द लॉ, और सेक्शन रॉन्ग हुआ तो फिर पूरा 0 मिलता है? जस्ट वो वेरीफाई करना था। देखो, सेक्शन का अगर मैं बोलूँ ना, तो सेक्शन, ये सब कहने की बात है कि सेक्शन लिखना चाहिए कि नहीं। अगर याद है तो लिख दो, नहीं याद है तो मत लिखो, गलत तो मत लिखो, ये तो बाय डिफॉल्ट है। अगर लग रहा है इक्का दुक्का चल रहा है कि जो ब्लॉक क्रेडिट था वो 17.5 में था कि 17.3 में था, ये नहीं याद आ रहा, तो डू इट की लिखो ही मत। और अगर आप पूरा श्योर हो कि आप ब्लॉक क्रेडिट 17.5 में ही आता है, तो दैट्स इट, लिख दो। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे या कम। मैंने बहुत सी जगह पे लिखे थे, तो मुझे कोई एडिशनल मार्क्स मिले नहीं है ना, मेरे कहीं कहीं पे जहाँ पे नहीं लिखे लॉ डीटी आईडीटी में, तो वहां पे मेरे मार्क्स कटे भी नहीं है। तो इसका कुछ लोड तो पालना ही नहीं है कि सेक्शन लिखना है कि नहीं, आता है लिख दो, नहीं आता जान दो। I would like to add one point in this. Yes, कि yes. लॉ में सेक्शंस की बात हो रही है, तो मुझे कभी सेक्शंस याद नहीं होते थे, ठीक है? तो मैंने लॉ में एक भी सेक्शंस कोट नहीं किए थे, बट स्टिल आई स्कोर्ड 65 इन सीएमए फाइनल लॉ। तो सेक्शंस के पीछे मत भागना, कंसेप्ट्स और आंसर राइटिंग सीख के जाना, बस बाकी गुड स्कोर कर लोगे। Right. Okay, there are many questions coming in this chat box. So for intermediate, how many months are enough for preparing both groups for CMA Inter? Yes, anybody? Divya, NC, please. Suraj bhai, Yes. I would suggest one thing for all the panelists. If all of them could share their email IDs in the chat section, so that जिनके Right. जिनके भी questions आए नहीं है या टाइम नहीं मिला है, they can directly contact them and get their queries answered. Yes. Students, you can raise your hand and ask your questions to the panelists. We have 5 minutes to go, so you can raise your hand and ask the question. Neha Yadav has raised the hand. Neha, you can ask the question. Unmute yourself. Yes, sir. Thank you, sir, for giving opportunity. Sir, I want to ask about on subject risk management in banking and insurance, in which there are case study questions. So, how to approach that case study question? How to prepare for that subject? It is in final, PMA final. You can also take the name from whom you want the answer, because we have good number of panelists. I want answers from if someone have choose those subject in their final attempt, because I don't know the panelists have attempted those subject. Like SPM is common, so people have took many, but this is unique subject, that's why I took. Harshit or Rancy, Sarthi, any one of you? Divya? I don't think so कि वो सब्जेक्ट किसी ने लिया होगा. But all have chosen SPMBV only. Say basically सबने SPMBV लिया रहता है क्योंकि उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं, तो वो एक स्ट्रेट अवे लॉजिक है. बट या अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात करूँ, तो अगर मैंने थोड़ा बहुत पेपर देखा था इसका, बिजनेस एंड इंश्योरेंस वाले का, तो मैंने
अगर इसमें बोलो तो अगर आप केस स्टडी की तैयारी कर रहे हो तो लाइक लॉ में अगर आपने केस स्टडी में जैसा आंसर लिखे थे और तो उस तरीके से फ्रेम करोगे तो चल जाएगा। आई नो वन गाय जिसने ये क्वेश्चन मतलब पेपर अटेम्प्ट किया था, तो मैंने अपनी लिंक्डइन डाल के रखी, मैं उसको आपसे कनेक्ट करवा दूंगा, वो आपको बता देगा अच्छे से। Great. Thank you, sir. Great. So overall, this has been a very informative session, and because of the shortage of time, we have to curtail it and we have to stop it here only. I once again, on behalf of the institute, thank our esteemed panelists Sir. for being part of this session. Sir, it is Tanmay going. sir. Sir, if possible, if go for 15-20 minutes more, I think helpful to the students, sir. Sir, we Yes. are more than happy. Yes, yes, definitely. If Students, raise your So, hand sir, and you can ask the questions, please. also, meanwhile, suggest all the panelists to share their email IDs if not done yet. हाय एवरीवन, जस्ट एक छोटा सा और एक क्वेश्चन था। समटाइम्स ना मतलब ऐसे होता है, मोस्टली मतलब सारे स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ रहेगा कि मतलब 3 आवर्स बहुत शॉर्ट गिरते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में स्पीड रखते हैं बट फिर एंड मोमेंट में कभी कभी कुछ चीजें रिकॉल नहीं होती। तो स्पेशली फॉर एसएफएम मतलब टाइम मैनेजमेंट का अगर कोई ट्रिक आप बता सकते हो तो मतलब आंसर आने के बावजूद भी थोड़ा मतलब एंड मोमेंट पे थोड़ा कम शॉर्टेज गिर जाता है। तो मतलब मैंने बहुत चीजें ट्राई की, मॉक टेस्ट लिया मैंने, इवन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में वो लिखना भी चालू किया। बट इफ एनीथिंग, इफ आई एम मिसिंग मतलब और कुछ एडिशनल पॉइंट हो तो I can इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मेरा एसएफएम का पेपर में बहुत ज्यादा मिस्टेक हुई थी। मैंने अपना 3 क्वेश्चन काटे थे, तो मैं बता दूं टाइम शॉर्टेज तो मेरे को सबसे ज्यादा हुई होगी, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन किए थे, नेक्स्ट काट के फिर से उसको सही किया, मतलब 3 to 6 टाइम सॉल्व किया मैंने 3 क्वेश्चन को 2 बार करके, ठीक है। तो अगर मैं आपकी मेरी आंसर शीट भी शेयर करूंगा आपके साथ, आप मेरे को लिंक्डइन पे करना, तो आप देखना इतना काटा पीटी की थी, फिर भी इंस्टीट्यूट ने मेरे मार्क्स नहीं काटे उस काटा पीटी के लिए। तो बहुत से लोगों का मिथ होता है कि मैंने काटा पीटी कर दी तो मार्क्स, क्योंकि मैं खुद आके घर पे जाके रोया था कि सब तो काट दिए, सामने वाले को समझ के आएगा। एक तो अब तो ऑनलाइन और चेक होने लग गया पेपर, तो और दिक्कत। फिजिकल होता है तो कहीं ना कहीं से अमाउंट तो ढूंढने का, ऑनलाइन में स्कैन दिक्कत हो गया, तो मेरे तो लग जाएंगे फिर, तो वो चीज तो नहीं होगी। और अगर मैं ये बताऊं कि पेपर लेंथी लगता है ना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डू दैट क्वेश्चन, जैसा चिराग ने भी बोला था और बाकी सारे पैनलिस्ट ने भी बोला था कि डू दैट क्वेश्चन जिसको जो आपको आता है, जिसमें आप स्ट्रांग हो, वही क्वेश्चन आप पहले कर लो। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मेरे को बॉन्ड वाला क्वेश्चन नहीं आता था, मुझे आगे के जो फॉरेक्स के रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन थे, वो भी एक क्वेश्चन था वो मेरे को नहीं आता था अच्छे से। तो आई विल ट्राई दैट आफ्टर द एंड ऑफ दैट क्वेश्चन जो मेरे को बहुत अच्छे से आते थे। और उन क्वेश्चन में भी मेरे से काटा पीटी हुई थी, क्योंकि मैं पैनिक कर गया था वो 2 क्वेश्चन देख के कि जो मेरे को नहीं आ रहा है। तो ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, एंड स्टिल आई होल्ड दैट रैंक। तो मैं ये बोलूंगा कि ये चीज तो बहुत कॉमन है, हो जाता है पेपर। फोकस ऑन दैट कि जो आपको आता है वो फटाफट फटाफट कर लो। और बहुत से लोग बोलते हैं कि पहले क्वेश्चंस कर लो देन एमसीक्यू करो, बट मेरे हिसाब से पहले एमसीक्यू कर लेने चाहिए। अगर आपको जो किसी भी एमसीक्यू पे टाइम वेस्ट मत करो, बट जो एमसीक्यू आते जा रहे कट 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 करते जाओ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि 20 मार्क्स तो वैसे ही आ चुके हैं जेब में, क्योंकि आपको Right. पता था उसमें शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स आ रहे हैं। वो माइंडसेट आपका होना चाहिए कि हाँ ये 20 मार्क्स तो आ गए, 20 मेरे को आगे से निकालने हैं, बाकी तो जय माता दी करके जितने मिले वो बहुत बढ़िया है। Divya, you wanted to add something? Srushti has raised hand. Srushti, you can Just ask. a minute, I would like to Divya add also. something to that. Yes. Because SFM मेरा भी पेपर देख के, SFM is a paper जहाँ होता है ये time crunch, because इतना heavy है वो subject and there are so many questions. So कभी-कभी, so now as Hans mentioned, ऐसा होता है if you know कि ये question ठीक से हो जाएगा तो पहले कर लो, absolutely right. But ऐसा कभी-कभी होता है कि you know कि ये question है and ये मेरे को आता है, but while solving it, somewhere you are stuck sometimes. It happens, tends to happen like a lot of times, has happened with me. So in those cases मैंने क्या किया है कि like अगर वो मैं solve कर रहा है, मेरे को कहीं लग रहा है shit मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है इसके आगे क्या था, I've just left that page blank, I've gone on to solve the next question. You अंदाज तो आपको पता है कि कितना इसमें लगेगा space and whatever. Don't like, बहुत time मैंने ऐसे लोगों को देखा है, they just like are stuck to that question in solving that question, and फिर वो ego पे आ जाता है, अरे ये question तो मेरे को आता था, मैं कैसे नहीं कर रहा हूँ ये। But ego लेके exam नहीं लिख सकते हम, because कभी-कभी हो जाता है, mind gives up on you sometimes. So move on, solve the next question, जितना आता है उतना करके बाद में you always have like at least 15 minutes on hand
to come back and solve the question from wherever you left it. So that is all that I would like to add. Thank you, Divya. I Srushti would has also raised her like hand. to add Srushti, one can you more ask? point in this, sir. Yes, please. ओके तो लाइक एसएफएम में ही है हम, तो मैं भी एक बताती हूँ। एसएफएम का पेपर बहुत डरावना आएगा, पेपर में देख के तुम्हें लगेगा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो सेम हैपेंड विद मी, एक क्वेश्चन था, मैं उसे बना रही थी और मुझसे वो नहीं बन रहा था, आई ऑल्सो गॉट स्टक, बट स्टिल मैंने जो भी बनाया, मैंने घर आके आंसर चेक किया, मेरा आंसर भी रॉन्ग था, बट स्टिल मैंने वो बनाया था और स्टेप मार्किंग तो मिलेगी। तो स्टिल तुम्हें लगे कि गलत बना रहे हो, फिर भी बना के आना, तो स्टेप मार्किंग कम से कम 3 मार्क्स तो मिलेंगे एक 7 मार्क्स के क्वेश्चन में। और जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है, उसमें एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, क्योंकि पूरा पेपर देखने के बाद अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमें नहीं आते होंगे, तो फिर वापस आके एमसीक्यूज भी नहीं सॉल्व होते। तो एमसीक्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना। और एसएफएम के पेपर में 100 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके जाना कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो छूटने ही वाले हैं। Right. Add one more point, just one point last. मेरे को लगता है कि शायद ये वीडियो वो भी लोग देखेंगे या देखने वाले होंगे जो अभी तैयारी करेंगे, मतलब जिनका फाइनल आने वाला होगा। तो आई थिंक सो मेरी ये बात से सारथी, चिराग, हर्षित, दे ऑल आर चार्टर्ड ऑल्सो, तो मेरे को पता है कि उन्होंने एएफएम किया है। तो मैं सबको ये एडवाइस करूंगा इन एसएफएम कि वो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट के एएफएम के पेपर जरूर सॉल्व करे, उससे क्वेश्चंस उठा के आते हैं कॉपी पेस्ट डिट्टो विदाउट चेंजिंग एनी सिंगल अमाउंट, ठीक है। तो आई थिंक सो सारथी, चिराग एंड हर्षित ऑल विल एग्री ऑन दिस। राइट। यस, किसने हैंड रेज किया था? यू कैन स्पीक अप। We have 2 people who have raised hands, Pooja and Srushti. Srushti Hello, has sir. been Good there for a evening. while. Srushti, you can ask the question. Sir, my question was, is there any strategy to like score 30 on 30 for MCQ? Like theoretical, we can guess, but what exactly when some practical case study type question comes and we are not able to catch what exactly, how we need to solve this? And at that time, what strategy we can apply? Yes, Sarthi, you can. यस, इन दिस आई वुड लाइक टू से दैट कि जो 30 on 30 की तो कोई स्ट्रेटेजी है नहीं ऐसे, बट ये है कि जो आपकी मॉड्यूल में जो एमसीक्यूज दिए ना, वो आप सही से जरूर देख के जाए, क्योंकि बहुत हद तक एमसीक्यूज उसमें से सेम भी आते हैं, तो आपके बहुत सारे मार्क्स उधर से कवर हो सकते हैं। बाकी मतलब 30 on 30 तो आपके जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उस पर डिपेंड करता है, पर जो स्टडी मॉड्यूल्स के एमसीक्यूज है वो अच्छे से देख के जाए। राइट। Okay, thank you. और पास्ट 5 इयर्स के एमसीक्यूज भी देख के जाना। स्कैनर जो होती है उसमें पीछे सारे एमसीक्यूज होते हैं, तो पास्ट 5 इयर्स के एमसीक्यूज और इमीडिएट प्रीवियस अटेम्प्ट के एमसीक्यूज तो जरूर देख लेना। ऐसा लगता है कि वो थोड़ी आएगा, पर वो भी आ सकता है। सारथी, हंस, देयर वाज अ क्वेश्चन, आपके लिए कितने मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किए थे? हाउ मेनी मॉक Like sir, टेस्ट? my case was very different. Like I gave my CA examinations in May 25 and had my CMA final examinations in June 25. So I just had a 15 days of gap between both the examinations. तो मॉक टेस्ट तो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। 15 डेज में ये था कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए, वही बहुत है। So it's not necessary कि मॉक टेस्ट देना ही है। Yes, yes. We have Pooja who has raised the hand. Pooja, can yes, you please share your question? All. Actually wanted to ask everyone, like is there in a presentation skill to get a rank? This first answer this, ये रैंक जरूरी है या नहीं है? Then go for that presentation skill. Yes. Yes, sir, जरूरी है। I would like to try to answer this. So, see, presentation to some extent does matter, I'll say, क्योंकि you see from that perspective कि if you are on a checker side, अगर आपको एकदम एक आंसर both way, be it theoretical or practically, आपको आंसर एकदम, if I'm talking from a theory point, एकदम किसी ने बुलेट में लिख के दिया है, तो you will also be ना कि जो आपको पॉइंट चाहिए when you are comparing it from a suggested answer, अगर आपको डायरेक्टली वो पॉइंट्स दिख गया है तो आप बहुत क्लियरली उन सबको चेक करके एंड यू कैन गिव द मार्क्स।
बट आपने अगर एक पूरा एक सपोज लॉ के क्वेश्चन के लिए 1 पेज का पूरा पैराग्राफ लिख दिया जहाँ पे कोई गैप्स नहीं है, कुछ बुलेट्स ये सब नहीं है, तो फ्रॉम अ चेकर पर्सपेक्टिव उनको पूरा वो आंसर ये सब पढ़ना है एंड ऑल दैट, सो आप वो पर्सपेक्टिव से सोचिए। एंड अगर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करें तो आपका एक पॉइंट है, इफ यू सी की इंस्टीट्यूट डज नॉट ओनली गो फॉर द फाइनल आंसर, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। तो अगर आपने एक बहुत क्लियरली सारा एक जैसे एसएफएम का क्वेश्चन ले लेते हैं यार, एक सीएफआर का, आई थिंक अभी हंस ने भी एग्जांपल दिया कि एंड ऑफ द आंसर इफ नॉट मैच, बट क्योंकि पूरा स्टेप सेम सही था तो उनको वहां पे मार्क्स मिल गए थे उसके लिए। तो अगर आपने एक जैसे कंसोलिडेशन का आई थिंक पूरा लंबा 14 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो इट इज नॉट कि पूरा 14 मार्क डिपेंड्स कि आपका जब तक बैलेंस शीट का जो फाइनल नंबर है दैट मैचेस विद द सजेस्टेड आंसर। अगर आपने जो नोट्स बनाए से अभी हम लोग अगर बात करें कि कितना गुडविल या कैपिटल रिजर्व था, कितना वो प्रॉफिट डिविजिबल होकर नेट प्रॉफिट या एनसीआई में जाता है, तो अगर आपका वो नंबर सेम हो गया, एंड ऑफ द नंबर कुछ चेंज भी हो गया और उसके अलावा आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, ठीक है, उसके लिए 2-3 मार्क्स जाएगा। बट आपने अगर एक पूरा वर्किंग नोट्स बनाया है, आप डायरेक्ट टैक्स में भी कह रहे हो, जो डायरेक्ट टैक्स में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आता है, इट इज की नॉट कि जब आपको पूरा टैक्स का नंबर सही आ रहा है, अगर आपका टोटल इनकम भी सही हो गया बट ठीक है टैक्स में इशू हो गया, तो यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट। एंड फ्रॉम अ चेकअप पर्सपेक्टिव ऑल्सो, इफ यू आर जस्ट कंसोलिडेटिंग आंसर फ्रॉम ऑल द वे ना, तो आप ये सोचो उनको कितने सारे एग्जाम्स मतलब कितने सारे आंसर शीट्स चेक करने होते हैं, आप पर आंसर शीट लाइक देयर 20 to 30 pages, so they will also feel very much comfortable in checking a paper where all the answers are written clearly and all. So from a psychological perspective that is very good for sure। आप जब पेपर दे रहे हो तो फर्स्ट आपका हमेशा ओपिनियन होना चाहिए कि मेरे को इतना भी टाइम नहीं लगाना है कि इतना कोई सुंदर सुंदर पेपर नहीं बनाना, वो कोई आर्ट्स का पेपर नहीं है, बट या आपका आंसर भी करेक्ट होना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग भी कि जिस तरीके से वो आंसर को आपने प्रेजेंट किया है वो एकदम एक होना चाहिए कि एज अ चेकर वो उनको समझ आए, दे गिव यू द मार्क्स दैट यू डिजर्व। सो चेक कर दैट वे आई देखने से का कि कंसेप्ट क्लैरिटी इज देयर। यस यस चिरक, गो अहेड। यस सर। सो वही जैसे सूरज सर ने कहा कि आप जब उसको नोट्स में ऐसे बना के दोगे तो उनको दिख रहा है कि अच्छा आपको कंसेप्ट पता है, यू नो द कंसेप्ट, ठीक है मे बी लास्ट में एक कैलकुलेशन एरर हो गया बट यू नो दैट कंसेप्ट देयर। So that is what I'll say about presentation. Can I just add something to that? As he said, presentation वगैरह matter तो करता है, but what worked for me, inter and final, like something that I have stuck by is underlining like keywords, because theory wise like law ही समझ लो that it's very heavy, like even for a like the checker who's checking and going through your answers, I don't think that person has the time to go through all the words. So what you think is a keyword from your end, if you could just underline that, अगर time बचता है end में, I think that goes a long way too. Right, right. Yes, any other questions? Suraj bhai, I think we'll have to Yes, Akshay wind bhai. up. Yes, yes, We'll have yes, to please. wind up because it's already we're 10 minutes past the 5 o'clock. So in Yes. this case, Tanmay sir from WRC, on behalf of the institute, I would like to thank all the panelists for being part of this session. I am more than 100% sure that your experience and inputs have helped people who have attended this session. And now that you have shared your respective email IDs, anybody who wants to get in touch with them or have any questions, you can directly contact them. And I once again thank all the panelists, all the people who attended this session, and the institute for arranging this particular session. Over to Tanmay sir. On behalf of Western India. Sorry to interrupt. Also would like to thank Suraj bhai for being a good moderator as usual. And yes, over to Tanmay sir. Thank you, sir. On behalf of Western India Regional Council of the Institute of Custom of India, I thanks to all the office bearer, or Mir Vyas sir chairman, or Nandisha sir vice chairman, Chaitanya Moore secretary, or Arindam Goswami sir as a treasurer. I also extend our heartful thanks to our moderators, CM Akshay Shah sir and CM Suraj Lauti sir. Also thanks and share their invaluable insight on how to crack the examination with flying color. Also all the panelists. So thank you once again to all. So we are conclude this session. Thank you so much, sir. Thank you, Okay, sir. all the best to all of you. All the best for examination. Yes, all the best. Do well. Hopefully, some of you will form part of the next such session. So all the best.
Thank you, everyone.